morning. Now we are at the end part of chapter number 5, which is complex number. Let us start with exercise 5. Question number 1. I raised to 18 plus 1 upon I raised to 25 and raised to q, and convert this complex number in the a plus bi form. It means real part of imaginary number and real part of complex number and imaginary part of complex number. इसको हमको convert करना है. Now we have only one value in this chapter, I square equal to -1. So it is I square raised to 9. I square raised to 9. So 9 2s are 18. Problem is solved now. But the 1 raised to 25 is 1 and I raised to 25. So I square raised to 12 into I. I raised to 25. It means I square raised to 12. तो I raised to 24 हो गई and I की 1 पावर, तो 25 पावर चाहिए हमको and raised to 3. Therefore it is -1 raised to 9 plus 1 upon -1 raised to 12 into I and whole cube. Replacing I square by -1. So -1 raised to 9 is -1 because of odd power, and -1 raised to 12 is +1. So it is 1 upon I and raised to q. Now it is 1 upon I. If I is in denominator, then multiply and divide by I. Therefore -1 plus I upon I square raised to q is equal to -1 minus I the whole cube. Because I square is -1, so -1 and this plus gives you minus. Now -1 minus I the whole cube. So it is written by take minus common, then it is 1 plus I the whole cube. अगर ये ब्रैकेट में से अगर हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस का क्यूब होके बाहर आएगा. इट इज लाइक दिस, माइनस ए माइनस बी क्यूब. तो माइनस कॉमन तो उसका क्यूब आ जाएगा और ए प्लस बी क्यूब. तो ये माइनस मैंने कॉमन निकाला तो बाहर आया तो क्यूब हो गया. तो -1 का क्यूब इज -1. बट इफ इट इज माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर and then you take minus common, then -1 का स्क्वायर हो जाएगा and square of -1 is +1. So 1 plus I the whole cube. Now what is the formula of a plus b the whole cube? It is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. A plus b the whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. You know very well this formula. And if minus sign is there, then put every term as a minus sign. Second term negative, third, and fourth. All terms are negative. If you open this bracket, then minus minus plus हो जाएगा. अभी तो हम बात करेंगे a plus b the whole cube. तो it is 1 cube plus I cube plus 3I into 1 plus I. So it is 1 plus I the whole cube.
therefore it is minus 1 plus I square into I plus 3I plus 3I square. Again replacing I square by minus 1. So it is 1 minus I plus 3I minus 3. I square is minus 1, then minus I and minus 3. Then 1 minus 3 is minus 2 plus 2I. 1 minus 3 is minus 2 and minus I plus 3I is plus 2I. And you open this bracket, it is 2 minus 2I and it is your answer. It is converted into A plus BI form. Real part of this complex number is 2 and imaginary part of this complex number is minus 2. It is exercise 5. So it is a revision of entire chapter. इस चैप्टर के सभी पार्ट जो हम पढ़े हुए हैं वो सब आ जाएंगे. Now question number 2. Z1 and Z2 are two complex number. Then prove that a real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. ये टू प्रूव का सम है. ये हमको प्रूव करना है कि Z1 एंड Z2 दो डिफरेंट रियल नंबर्स है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो और उसका रियल पार्ट निकालो, तो वो रियल पार्ट कितना होगा. तो Z1 का रियल पार्ट एंड Z2 का रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट और Z2 का इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले सपोज Z1 इज इक्वल टू x plus iy and Z2 is equal to a plus bi, क्योंकि Z1 and Z2 are two complex number, तो दोनों डिफरेंट हो गए, a plus bi and x plus iy. Now what we need in right hand side, we require real part of Z1. And what is real part of Z1? Real part of Z1 is x. Real part of Z2 is a. Imaginary part of Z1 is equal to y. And imaginary part of Z2 is equal to b. Z1 का real part, इसका imaginary part. Z2 का real part and imaginary part. वो आ गया. Now we need a real part of Z1 into Z2. Now Z1 into Z2 करेंगे. बाद में सोचेंगे कि इसका रियल पार्ट क्या है. Z1 into Z2, it is x plus iy into a plus bi is equal to ax plus bxi plus ayi plus ybi square. Again I square is minus 1, so ax minus by plus bx plus ay into y. तो ये Z1 into Z2 आ गया. अब हमको ये प्रूव करना है कि Z1 into Z2 का रियल पार्ट. Now take left hand side
of given real part of z1 into z2. It is our z1 into z2. It is also our z1 into z2. z1 into z2 आ चुका है, तो अब उसका रियल पार्ट क्या है, तो ये उसका रियल पार्ट है. It is xa minus yb. अब replacing the value of x, what is x? x कहाँ गया, ये real part of z1 and a is real part of z2 minus what is y? Y is a imaginary part of z1 into imaginary part of z2 and it is proved. ये प्रूव हो गया, देख लो एक बार देख लो सम पूरा. तो आपको समझ में आ गया होगा. Question number 2 is a theoretical sum. Z1 and Z2, two complex numbers are given. Means you have to suppose them. और प्रूव करना है कि Z1 और Z2 का मल्टीप्लीकेशन करो and any two real numbers are multiplied, then you got another complex number. तो आपको एक नया complex number मिलेगा. उसका रियल पार्ट कितना है, तो z1 का रियल पार्ट इंटू z2 का माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. तो पहले z1 और z2 ले लिया मैंने, सपोज कर लिया, बाद में सबके रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन कर दिए. बाद में वी नीड z1 इंटू z2. तो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मल्टीप्लीकेशन किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला. इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. अगर z1 और z2 का इमेजिनरी पार्ट होता तो आपका आंसर ये आता. तो ये दिस आंसर इज imaginary part of z2 into real part of z1 plus imaginary part of z2 y imaginary part of z1 into real part of z2. Question number 3. 1 upon 1 minus 4i minus 2 upon 1 plus I bracket over 3 minus 4i upon 5 plus I. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 अपॉन में, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 अपॉन में. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स यू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर दिस
is another multiplication. Then find its real part and imaginary part, means convert into standard form. पहले रियल पार्ट एंड देन इमेजिनरी पार्ट. तो अब हम सम स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम. 1 प्लस आई माइनस 2 1 माइनस 4i अपॉन 1 माइनस 4i into 1 plus I. By taking LCM, it is cross multiplication simply. So into 3 minus 4i upon 5 plus I into 5 minus I and 5 minus I. इसके साथ इसका भी मल्टीप्लिकेशन, इसका भी कॉन्जुगेट नंबर ले लो. 5 plus I and conjugate number of 5 plus I is 5 minus I. अब इसको ब्रैकेट ओपन करो. 1 plus I minus 2 plus 8i upon 1 into 1 is 1 plus I minus 4i minus 4i square. और यहाँ पे 3 into 5 15 minus 3i minus 20i plus 4i square. How to open this bracket? 3 into 5 so 15 minus 3i minus 20i and minus minus plus 4i into I is I square, and denominator is 5 square minus I square are the factors of a plus b and a minus b. Now our first bracket is 1 minus 2, it is minus 1 plus 8i plus I, it is 9i upon 1 minus 3i plus 4. I minus 4i gives you minus 3i. And minus minus plus 4, I square is minus 1. Again this part is 15 minus 23i, combination of this, minus 4. Again put I square equal to minus 4 and denominator is 25 plus 1. Now it is minus 1 plus 9i, 15 minus 4, it is 11 minus 23i upon 26 into 5 minus 3i. अब ये डिनोमिनेटर में आ गया 5 minus 3i, तो अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 plus 3i. आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है. इफ डिनोमिनेटर इज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर और ये 11 minus 23i वो बड़ा नंबर है तो उसको पहले लिखो. minus 1 plus 9i into 5 plus 3i divided by 26 into 5 square minus 3i का square. Now 11 minus 23i, 11 minus 23i. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो minus 1 into 5 is minus 5 minus 3i plus 45i plus 27i square upon 26 into 25 minus 9i square. Now it
it is 11 minus 23i, 27i square, तो minus 27 minus 5 minus 32 plus 42i divided by 26 into 25 plus 9, तो 11 minus 23i and take 2 common, तो कॉमन निकालेंगे तो माइनस 16 प्लस 21i अपॉन 2 into 13 into 34. Then now this 2 and 2 cancel. अब जाके denominator is a multiplication of these two and numerator into 11 is minus 176 plus 11 into 21 231 plus 11 into 21 231i again plus 23 into 60 368 और ये माइनस माइनस प्लस एंड प्लस और इट इज माइनस 23 into 21 483 and what about 13 into 34 this 442 now it is minus 176 plus these two terms containing I. 6 plus 1 sorry 8 plus 1 9 6 and 3 9 3 and 5 99i plus 483 upon 442 now 483 minus 176 it is 307 plus 599i and divided by 442 and it is also divided by 442 तो ये एक बड़ा सम था एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करो इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपने देखा होगा कि मैंने भी कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशंस किए ऐसा कोई भी सम आउटसाइड का आ सकता है मेथड आपको समझ में आ गई
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका।